Okay, today we are going to perform one of the practical. So today we are going to perform a glucose tolerance test. This determines by testing glucose tolerance we can diagnose the patient for any disease like diabetes or even the any problem with the glucose tolerance. So the glucose tolerance test we have performed in a rabbit by giving a oral glucose, intravenous glucose, and then the both method has been compared that how much the glucose has been tolerated by the rabbits. So today we are going to discuss that one, how to perform this glucose tolerance test and why to perform it. So this is the first slide in which I am showing you the rabbit on which the Dr. Tahsin Jamil has did the MPhil on this title, and the glucose tolerance test was performed on a rabbit, and these pictures are belonging to the thesis of Dr. Tahsin Jamil Sheikh. Whereas this slide is also giving you a overview of my um, contact points that you can watch this lecture which is uploaded on my YouTube, and as well as you can contact with me on my official email or even my journal email, that's kashiwal2003 at gmail.com, or you may have to contact with me on abikashiwal at sauedu.com. Whereas this WhatsApp number has been given to you that we always make a WhatsApp group on which we share most of the materials through a WhatsApp or even through an email. So this lecture, recorded lecture, will be available on the Microsoft team and as well as on my YouTube channel. You can watch again, and if the student remains absent, they can even watch this lecture by for a refresh the lecture, or even they can refresh their courses. Uh, this lecture also being given to previous batches. This is also available. The recording of this glucose tolerant test is also available on the YouTube, whereas the PowerPoint presentation is also available on the in this group. Especially the group is made for the practical and as well as for the theory. So this PowerPoint presentation is available in the file, and you can download that one and to see uh, this lecture or a practical. You have to write this practical on your practical journal when you have to come down for uh, on-campus classes. You have to prepare your journal. So this will be the third uh, practical exercise which we are discussing over here. So all these practicals will be conducted in the laboratory when you are returned back to the campus. Now, the definition, the glucose tolerance test is a well standardized test and is highly useful to diagnose diabetes mellitus in the doubtful cases. So, the commonly referred to as oral glucose tolerance test, OGTT. This is the short form of an oral glucose tolerance test. So, this mostly being performed to confirm the cases of a diabetes mellitus in the patient. So the oral dose always being given to the patient, and then the glucose tolerance test uh, for for diagnosis of diabetes mellitus is being carried out. So the glucose tolerance test is a decreased glucose tolerance test, maybe decreased carbohydrate tolerance. So non-utilization of a carbohydrate load is observed.
in conditions causing hyperglycemia. For example, the diabetes mellitus is causing a hyperglycemia. Hyperactivity of the anterior pituitary and adrenal cortex is also causing a hyperglycemia in the patients or in the animals and human beings. Hyperthyroidism is one of the reasons to be having a hyperglycemia. The stress also produces the hyperglycemia in the patient. So the stress, hyperthyroidism, or the hyperactivity of the anterior pituitary gland should be ruled out whenever we are going to diagnose diabetes mellitus in the animals or in the human being. So the glucose tolerance, if you can see that the glucose tolerance can be increased. This glucose tolerance can be increased when the carbohydrate tolerance is observed in all conditions that causes the hyperglycemia. One is the hypopituitarism is causing the hyperglycemia. Hypoinsulinism is also causing. Hypothyroidism is causing the increased glucose tolerance. Adrenal cortical hypofunction is also causing the increased glucose tolerance, whereas the decreased gastrointestinal absorption, like sprue or a celiac disease, can cause a glucose tolerance, increased glucose tolerance in the patient. So mostly the oral glucose tolerance test is being performed. The patient has symptoms of a suggestive of a diabetic mellitus. So if the patient is a doubtful for a diabetic mellitus, this test, oral glucose tolerance test, is being performed to confirm whether the patient is having a glucose tolerance, the diabetes mellitus, or he doesn't possess, or even having a glucosuria in him. So this can be ruled out, that whether the patient is suffering from a diabetes mellitus or he is suffering from the conditions like a pregnancy, like a stress, like a hyperthyroidism, or hyperinsulinism. So this can be ruled out by giving an oral glucose tolerance test. So the fasting blood sugar value is inclusive. That is between the 110 to 126 mg per day. So during pregnancy, excessive weight gaining is noticed with a past history of a big baby, more than 4 kg, or a past history of a miscarriage. So this is a condition in which in the human being or in the lady, this condition may arise that may have cause a hyperglycemia. So this to rule out the benign renal glycosuria in asymptomatic persons with a sustained or a transient glycosuria, in persons with symptoms of diabetes but no glycosuria or hyperglycemia, so the persons with family history but no symptoms or positive blood findings, in persons with or without symptoms of diabetes mellitus showing one abnormal blood finding. So in patients with neuropathies or retinopathies of unknown origin. So these are the indications where we have to rule out the diabetes mellitus, or the different conditions may have to cause a hyperglycemia. So these type of the hyperglycemia which may arise due to abnormal conditions that may be determined by this oral glucose tolerance test. So this glucose tolerance test can clarify the doubtful, the diabetic mellitus and the other conditions, so that we can rule out the other abnormal conditions or a hyperglycosuria or even a hyperglycemia due to any reason, which is a pathological or even a physiological reason which may have to cause a hyperglycemia, that can be ruled out by this glucose tolerance test.
So, in a contraindication for a glucose tolerance test, this glucose tolerance test should not be performed in a proven cases of diabetic mellitus. If the person or the animal is suffering from a glucose tolerance, the diabetes mellitus, he should not be tested with an oral glucose tolerance test. Whereas the glucose tolerance test is required only in a doubtful cases, it is not recommended for follow-up of a patient. Even if it is being, it should be performed only once if it is clear that the diabetic mellitus is present in the patient. Then the repeated test should not be performed for a follow-up of patient after a treatment. So this is the test which can be performed only to rule out the diabetic mellitus or to other pathological conditions. So the test should not be carried out in actually ill patients. It is indicated only for the initial diagnosis. So whenever there is a requirement of an initial diagnosis, whether the person or the animal is possessing the diabetic mellitus or he has any other pathological condition by which he is producing a hyperglycemia, that can be determined by the oral glucose tolerance test. तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम सिर्फ अर्ली डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें डायबिटिक मेलाइटस प्रूव करना होता है कि उसमें डायबिटिक मेलाइटस है कि नहीं है, या फिर ये हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें ब्लड शुगर राइज हो जाए या यूरिन में ब्लड शुगर आता है, तो उसको हम क्लैरिफाई करें कि वो किसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से है या फिर डायबिटिक मेलाइटस की वजह से है। तो ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है ये ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें कंफर्म हो सकता है कि ये जो पेशेंट है वो डायबिटीज मेलाइटस डिजीज से सफ़र कर रहा है या फिर इसको जो हाइपरग्लाइसीमिया है या हाइपर ग्लूकोसूरिया है, दैट माइट बी ड्यू टू दी अदर रीजंस। तो उस रीजंस को एड्रेस करने में और ट्रीट करने में आसानी होती है। जब आप रूल आउट करते हो अदर एबनॉर्मलिटीज और फिर आपको स्पेशली पता चल जाए कि इसको डायबिटिक मेलाइटस है, तो फिर आप एक्यूरेट ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो एक्यूरेट ट्रीटमेंट करने के लिए एक्यूरेट डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। तो ये जो टेस्ट है ये एक्यूरेट डायग्नोस करके देता है कि पेशेंट में डायबिटिक मेलाइटस है कि पेशेंट में जो ग्लूकोज राइज हुआ है या फिर इसमें जो शुगर जो यूरिन में आ रही है या जो राइजिंग शुगर जो है ना ब्लड में आ रही है, दैट माइट बी ड्यू टू एनी अदर रीजंस। तो वो रीजंस सॉर्ट आउट करने के लिए और रूल आउट करने के लिए हम ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करते हैं। तो प्रिपरेशन है पेशेंट की, वो रिक्वायर्स देन whenever you are doing this test on any patient, then you have to prepare the patient. The patient is instructed to have a good carbohydrate diet for 3 days before to test. टेस्ट करने से पहले 3 दिन पहले उसे कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है कंटिन्यूस लेता रहे। डाइट कंटेनिंग अबाउट 30 to 50 ग्राम ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, उसको 30 से 50 ग्राम डेली जो है कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। that should be taken on the evening before to the test, और ये इवनिंग में लें कि उस टेस्ट से पहले वो 30 to 50 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट शुगर जो ले चुका हो। अदरवाइज द कार्बोहाइड्रेट में नॉट बी टॉलरेटेड इन अ नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन में वो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेट नहीं होता, इसलिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग अ continuous 30 to 50 grams of a carbohydrate daily, and then we are conducting after 3 days the test, and the patient is being recommended that he should have to take a 30 to 50 grams of the sugar before the test. So the patient should avoid drugs likely to influence the blood glucose levels. ऐसी कोई भी दवाई पेशेंट को नहीं खानी चाहिए जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो या इन्फ्लुएंस हो। तो पेशेंट शुड नॉट डू अ स्मोकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, और टेस्ट के दौरान पेशेंट को अलो नहीं है कि वो स्मोकिंग करे।
This is a blessing that our patient do not smoke. हमारे जो पेशेंट हैं वो स्मोकिंग नहीं करते. High efforts exercise on the previous day is to avoid it. So high efforts नहीं करनी चाहिए for exercise. The animal or the human being should not exercise on the very previous day, so that the test may have to give us a good results or right results. The patient should not take a food 8 p.m. the previous night. जो है रात के 8 बजे उसे खाना नहीं लेना चाहिए और उसको फास्टिंग पे रहना है. तो सुबह को जब वो आए तो वो फास्टिंग पे हो, तो he should not take any breakfast. This is to ensure the 12 hours fasting. ये रात को अगर 8 बजे से पहले खाना खाता है फिर सुबह 8 बजे आता है तो 12 घंटे कम से कम उसे फास्टिंग पे रहना है. जिस पेशेंट का हम ये टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट जो होगा वो फास्टिंग पे होगा. तो इसलिए the patient should be restricted that he should not take the breakfast, he should not take the meal of the night or dinner before after 8 p.m. So he should have to take a dinner on a 7:30 or even a 7:45 if the test is on the 8 early in the morning at 8 a.m. So the glucose tolerant test can be done by the standard is a oral glucose tolerant test, but some animals requires IV glucose tolerant test because having a problem in the absorption of a glucose through intestine, having the problem in the digestive system that the carbohydrate is not digested properly or glucose is not properly absorbed through intestine, then the IV test is recommended for those animals. Mini glucose tolerant test is a good test to perform on the animals or human beings to rule out the other conditions and to diagnose the diabetic mellitus in the patient. The procedure of a standard oral glucose tolerant test is that the about 8 a.m. आप 8 बजे रात का खाना नहीं खाया, 8 बजे से पहले खाया है और फिर 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक वो भूखा है पेशेंट, फिर जो है ना उस पे ये ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट होगा. तो अबाउट 8 a.m. सुबह को 8 बजे ये फास्टिंग ब्लड एंड यूरिन सैंपल्स आर कलेक्टेड. ये सुबह को हम उसका सैंपल लेंगे यूरिन का और ब्लड का दोनों का. दीज आर कॉल्ड जीरो सैंपल्स. इसको हम जीरो सैंपल्स कहते हैं. इनका जो ग्लूकोज लेवल होगा दैट इज नोन एज अ fasting samples or a zero samples which is taken before the load of a glucose. Now after taking samples on the fasting, then the load dose of a 70 grams anhydrous glucose dissolved in about 250 to 300 ml of a water is given to the patient. हम 75 grams glucose जो है वो पानी में 300 ml के पानी में डिजॉल्व करके पेशेंट को गिलास बना के देंगे कि इसको पिए. और फिर हम इन चिल्ड्रन अगर वो कोई बच्चा है तो अगर बच्चे पे टेस्ट हो रहा है तो दैट विल बी 1.75 grams ऑफ ए ग्लूकोज पर केजी बॉडी वेट इज गिवन. फिर बच्चे के लिए जो रिकमेंडेड ग्लूकोज डोज है वो है 1.75 grams ऑफ ग्लूकोज पर केजी. In the classical procedure, the blood and the urine samples are collected at a half hourly. ये डोज पिलाने के बाद ओरल ग्लूकोज लोड करने के बाद आधे घंटे के बाद हम उसका ब्लड भी लेंगे और यूरिन भी लेंगे सैंपल ऑफ द एंड एवरी हाफ आवर्स अप टू 3 hours. हर एक आधे घंटे के बाद उसका यूरिन और उसका हम ब्लड लेंगे and then we have to see the glucose level in the urine and glucose level in the blood. So the glucose is estimated in all blood samples and urine is analyzed from the presence of a glucose. और हम यूरिन में क्योंकि ग्लूकोज नहीं आता, मोस्टली इन नॉर्मल पेशेंट ग्लूकोज नहीं होता और इसलिए अगर ग्लूकोज नहीं है तो दिस इज वन ऑफ द indication that the patient is not suffering from the diabetes. So the diabetic patient must have a
glucose in the urine as well, whereas the blood sugar is elevated in other conditions as well in the blood. Whenever the blood shows the elevation of the sugar level, that is not confirmed or that is not indicating that the patient is suffering from a diabetic mellitus. So we will plot the curve that the blood glucose levels on the vertical axis against the time of a collection on the horizontal axis. So horizontal axis पे हम time रखेंगे और vertical axis पे हम samples का जो glucose level है वो रखेंगे. The curve is obtained is called a glucose tolerance curve. इस curve को जो ये curve बनेगी जिसमें हम x axis पे horizontal axis पे हम जो है टाइम रखेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे हम जो है वो ग्लूकोज लेवल रखेंगे. जो ये कर्व बनेगी इसके दरमियान ये कर्व ग्लूकोज टॉलरेंस कर्व कहलाती है. नाउ यू कैन सी दैट the on the fasting, if the patient having a 90 milligram per del in the blood glucose and the urine does not possess a glucose in the urine sample, and after 30 minutes after a loading of a glucose that which is being loaded to the 75 grams to the patient or 1.75 grams to the child per kg, then after a half hour the elevation will arise, the glucose level will arise. That will be suppose it is 100 mg per del. Then after 60 minutes, means after 1 hour, that will be rising up to the peak, that is 150 mg per del, and then definitely after 1 hour it has to go back and reverse back towards the normal, towards the fasting value. So that the 90 after a 90 minute means after a 1.5 hour it will be a 120 mg per del, whereas after 2 hours that will be a 110 mg per del, and after 100 that is after 250 minutes that will be 80 mg per del. So after 3 hours that has to reverse back, even it has to go back below the zero level or the fasting value, that is a 70 mg per del. But in continuously the urine samples will not show a single glucose level at any sample which indicative of a normal person. So the normal person does not possess the glucose in the urine, whereas the glucose level, the threshold has to rise after 1 hour and then decline and reverse back to a normal or even the below the zero after 3 hours. So this is the normal curve of the person. So normal glucose tolerance curve in all the patients which are normal, they will show this curve, and this curve is known as a normal glucose tolerance curve of the patient. So the normal glucose tolerance curve, that is the fasting blood glucose, 0 hour sample is 90 mg per del, which is a well within the normal range, that's 60 to 100 mg per del. This is the normal range. The normal glucose tolerance curve always remain within the ranges of a normal, and that if the animal on a fasting, it is showing a 90 mg per del, but after a loading of a glucose, it is rising from the 90 and then it has to come down up to a 60. That is a normal. So the range may be, the elevation range may be from a 60 to 100 mg per del. So there is a rise of a glucose after a glucose load, and the peak value is observed at 1 hour. This is due to absorption of a glucose from the intestine. So the glucose will be absorbed through intestine and it will elevate the glucose level initially in the blood from 90 to 100 after a half hour, and then 150 after 1 hour. So the peak level will be achieved after 1 hour in a normal patient.
Insulin is released upon an increase of a blood glucose level. जब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो फिर नॉर्मल जो वो बंदा है या जो नॉर्मल पेशेंट है, दैट हैज टू गिव रिलीज द इंसुलिन आफ्टर द ग्लूकोज लेवल हैज टू राइज अप, देन देयर इज अ फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज. जैसे ही इंसुलिन रिलीज होगी तो फिर द ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन विल बी प्रोमोटेड बाय द इंसुलिन. तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल की में कमी आएगी. द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज अचीव्ड आफ्टर 150 मिनट्स, और 150 मिनट्स के बाद हमें वो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पेशेंट में अचीव हो जाएगी. वेयर इज इफ द पेशेंट इज अ डायबिटिक, अगर वो डायबिटिक है तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट में हम जब फास्टिंग पे ब्लड ग्लूकोज लेवल लेंगे, दैट विल बी हायर देन द नॉर्मल. फास्टिंग पे ही डायबिटिक पेशेंट की जो लेवल ऑफ ए ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज है, दैट विल रिमेन हायर. सो द हाईएस्ट वैल्यू इज अटेंडेड एट 1 आवर एंड 130 मिनट्स. और जब इसकी हम ग्लूकोज लोड देंगे और उसके बाद हम उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे तो उसकी पीक जो है 130 मिनट्स तक मौजूद रहेगी. 1 आवर पे आएगी और 130 तक मौजूद रहेगी और फिर वो डिक्लाइन होना शुरू करेगा. लेकिन दी हाईएस्ट वैल्यू एक्सीड द रीनल थ्रेशोल्ड, और जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट विल बी more than the renal threshold. So renal threshold जो है वो ग्लूकोज का वो है 180 mg पर डेल, लेकिन 180 mg पर डेल से भी अबो होगा इवन इन दी fasting. So the glucose is found in almost all the urine samples. और ग्लूकोज जो है वो जैसे कि यूरिन सैंपल में मौजूद नहीं होता नॉर्मल पेशेंट्स में या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में, बट यू विल ऑब्जर्व इन ऑल द samples of urine possessing a glucose. So the glucose will be positive in the urine samples. So the blood glucose level does not return to a fasting level even within 2 and 30 minutes, 2 hours 30 minutes. 2.5 घंटे के बाद भी जब हम ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे तो वो फास्टिंग की जो ग्लूकोज लेवल है उस पे वो नहीं पहुंचेगी. इसका मतलब है कि ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इन द डायबिटिक पेशेंट्स विल नॉट टेक प्लेस एज इन अ नॉर्मल पेशेंट्स इज टेकिंग अप. तो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं होती. इवन इंसुलिन अगर इंसुलिन रिलीज हो भी तब भी वो यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं होती और उस थ्रेशोल्ड को नहीं पहुंचता जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड रीनल थ्रेशोल्ड है. तो इसका मतलब है कि डायबिटिक पेशेंट ऑन द फास्टिंग even after a feeding of a glucose load, they will remain with a higher range of glucose level. So जब भी आप सैंपल लेंगे तो उसमें ग्लूकोज लेवल जो है हायर होगी देन द नॉर्मल रेंजेस. तो इफ वी आर टेकिंग सपोज इन अ पेशेंट on the fasting we are taking a blood sample and a urine sample and we are processing it for diagnosis and investigation of a range of a glucose in the blood that will remain at 200. You have to remember that the 180 is a maximum threshold, renal threshold mg per del in the normal patients. So if it is on a fasting, it is a 200 mg, it means the patient is diabetic. And if it is accompanied with the glucose present in the urine, this is indicative of a diabetic patient. And then after a dose of a glucose, after a loading of a glucose, which is 70 grams to a patient or 1.75 grams per kg in a child, which is being orally given to the patient, so that we may have to measure the glucose level in the blood after oral
glucose being taken, and then the glucose level in the urine as well. So the samples after 30 minutes, after 60 minutes, after 90 minutes, after 120 minutes, and 150 minutes, and 180 minutes will be taken. So as you have seen that the after 60 minutes, it always been observed that the elevation has to reach at a peak, and in the diabetic patient, the peak is arise at after 60 minutes, but after 90 minutes, it will remain up to 300 mg per day. That is the highest level, and then the presence of the glucose in the urine sample is continuously from the first sample to a last sample, which is taken after 3 hours. So if you see that the level of a blood glucose did not come down or decline than the zero sample, whereas in the normal patients, the blood glucose level always been declined than the zero level. So after 3 hours, the glucose level is beyond a fasting level, and it is increased than the fasting zero samples. So the glucose level is higher in a diabetic patient and remain highest in diabetes. So this curve, which is developed in the diabetic patient, that is known as a diabetic curve, which may have to start from a 200 mg to and it may have to reach up to a 350 mg, and then it may have to decline up to 225 mg. So this curve which develop in the patients, that is known as a diabetic patients. So this curve is known as a diabetic curve. So this curve, if present in any patient, in any animal or a human being, that animal is diabetic animal. So the renal glycosuria, that's the glucose levels are within the normal limits. Glucose tolerance curve is normal. There is a lowering of a renal threshold. Thus, glucose is found in some of the samples depending upon the renal threshold. जब renal glycosuria होगा तो ये diabetic patient नहीं है. That always been remain with the glucose tolerance curve in the normal ranges. If you see that that might be the renal glycosuria might be due to early diabetic mellitus, that might be due to a pregnancy, that might be due to a renal disease, that might be a heavy metal poisoning, that might be due to a deficiency of carrier proteins, that might be the renal glycosuria can be observed in the children of diabetic parents. So the diabetic parents हैं, उनके माँ बाप जो हैं वो diabetic हैं, तो बच्चे में मीठे पेशाब होना it's one of the renal glycosuria. तो renal glycosuria हो सकता है उन पेशेंट्स में, उन बच्चों में जिसके माँ बाप diabetic हैं. So what is that? In the glycosuria cases, renal glycosuria cases, if you are taking the sample of a blood, sample of a urine, you will find on the fasting that the glucose level will be 90, and in the urine there will be no glucose. This is one of the indicators that it is not a diabetic. Then if you are loading a glucose to a patient and then observing the glucose level in the blood, that will rise up after 1 hour, that will be rise up to a 150 mg per day, and then it will go to a decline, and it will remain after 3 hours at a 90 mg per day, which is similar to a zero sample level. So you will find again the first sample and the last sample, which is taken after a 90 minutes, having a same results, means like 90 mg per day, having a no glucose in the urea, whereas in the renal glycosuria, if you are loading a glucose, the glucose will be observed the positive in the urine samples, and after 3 hours that will be a negative. So the curve is similar as it is developed in the normal patients or the normal human being, but in the renal glycosuria they will be a positive with the
glucose present in the urine after loading of a carbohydrate, whereas in the normal there is no glucose in the urine. This is the difference between the renal glycosuria patients and a normal human being. So the normal human being does not show any glucose level in the urine during after a loading of the glucose, and the curve will be the same. So if we see the curve of this patient and the diabetic patient, then we will see the great difference in between the diabetic curve and as well as a normal curve. So this glycosuria patient having also normal curve. So there is no difference between the normal curve and the curve of a renal glycosuria patient. So this is the same, but only the difference is that the glucose level is present in the urea, whereas in the normal humans there is no glucose present in the urea. Now the Lake curve. This is the Lake curve that is taken on the fasting. The glucose is normal and sharp rise within 30 minutes to 1 hour. The blood glucose level exceeds the renal threshold. The decline is rapid. The normal levels are attained back, and some of the urine samples contain the glucose, whereas the blood glucose is above the renal threshold. The Lake curve patient might be. The Lake curve may be observed in the hyperthyroidism, pregnancy, or the patients having a gastroenterostomy or early diabetic mellitus. So in these cases, the Lake curve can develop. So Lake curve can be observed as the normal curve is being observed in the renal glycosuria, whereas the Lake curve will be developed in the hyperthyroidism, pregnancy, gastroenterostomy, or early diabetic mellitus. So this means that we can rule out the patient having a Lake curve. They are not considered to be a diabetic. If they have the renal glycosuria curve, it means that the patient is not suffering from diabetes. So the diabetes have a special curve which is known as a diabetic curve. If the diabetic curve is present, then the patient is possessing the diabetes. Now the patient having a Lake curve, that after on the fasting, similarly the glucose, the blood glucose level will be 90 mg per day, and the glucose will be negative, nil in the urine sample. Whereas after loading the glucose, we will observe that there is a 230 mg per day to 230 mg per day on a 30, means it will achieve a peak after 30 minutes. Whereas after 60 minutes, the glucose level will be 180, and after 90 minutes, the glucose level will be again decline 150, and after the 180 minutes, the glucose level will be at 90. So it will be declined up to a 0 level. In the Lake curve, you will observe that the glucose level in the blood glucose, it is crossing a threshold which is 180, and then which is a 180 renal threshold. After 30 minutes, the blood glucose level is crossing a threshold which is 230, means it is the renal threshold is a 180, and after glucose is being loaded, then the patient is observed after 30 minutes it has crossed the glucose level beyond the renal threshold, and then immediately after 30 minutes it is going to a decline, and then reaches after 3 hours to a 0 level. So the 0 sample which is possessing the glucose level, that's 90 mg per day, that is being achieved after 180 minutes. So this shows that in this Lake curve, you will see that the glucose
will not be present after 1.5 hour in the urine, whereas after 30 minutes and after 1 hour, the glucose is present in the urine samples. So after 90 minutes, after 60 minutes, you will see that the glucose level is present in the urine. So this is known as a lag curve. If you see the lag curve and the normal person curve, so you have to see that there is a difference in between the lag curve and that is crossing the renal threshold in the lag curve, whereas the normal person does not crossing the renal threshold in whole the 3 hours period. So this is the one of the difference in between the patient having a lag curve and the patient who is a normal. So this is the difference, that the normal curve always remain within the threshold of the renal threshold, whereas the sample of a lag or a elementary glycosuria or a diabetic patient having a threshold higher than the renal threshold. So the conducting the glucose tolerant test, जब आप ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो व्हाट यू हैव टू डू, about 8 AM सुबह के 8 बजे ए सैंपल ऑफ द ब्लड इज कलेक्टेड, एक सैंपल लेंगे ब्लड का इन द फास्टिंग स्टेट, देन द यूरिन सैंपल इज आल्सो ऑब्टेन्ड, और फिर यूरिन का भी सैंपल लिया जाएगा। यह सैंपल कहलाएगा जीरो सैंपल, और यह सैंपल जो भी इसकी रीडिंग आती है फास्टिंग की वो हमारा स्टैंडर्ड होगा, और देन वी विल लोड द ग्लूकोज। हम एडल्ट में 75 grams anhydrous, 82.5 grams of a glucose monohydrate in a 250 to 300 ml of water हम देंगे। देन इन द चिल्ड्रेन, अगर वो बच्चा है तो फिर बच्चे को हम 1.75 grams per kg बॉडी वेट हम उसको ग्लूकोज पिलाएंगे ओरली। सैंपल्स कलेक्शन, WHO रिकमेंड करता है कि कलेक्ट only for the fasting and the 2 hours post glucose load samples, blood and urine. This is called as a mini glucose tolerant test. इसको हम कहते हैं मिनी ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। अगर आप एक सैंपल आप फास्टिंग पे लेते हो और 2 सैंपल्स आप लेते हो 2 आवर्स पोस्ट जो है ना, एक सैंपल लेते हो यूरिन का और ब्लड का और उसका कंपैरिजन करते हो, तो इसको कहते हैं मिनी ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। और इससे भी पता चल जाएगा कि जो बंदा है वो डायबिटिक है या फिर उसको कोई और रीजन की वजह से ग्लाइकोसूरिया या हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है। The normal values and interpretation. In a normal person, the fasting plasma glucose is 70 to 100 mg per day. जब कोई नॉर्मल बंदा होता है, कोई डिजीज नहीं है जिसको उसका जो वैल्यू है, रेंज है, वो 70 to 110 mg per day है। The glucose level rises and reaches a peak within a hour and can down to a normal fast level by 2 to 230 hours. 2 से 2.5 घंटे में जो ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज खाने की वजह से राइज हुई है, वो 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर उसे वापस उसी लेवल पे, फास्टिंग लेवल पे आना चाहिए। दिस इज ड्यू टू अ सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन इन द रेस्पॉन्स टू द एलिवेशन ऑफ ए ग्लूकोज लेवल। जब भी ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ब्लड में तो इंसुलिन रिलीज होगी और इंसुलिन फिर यूटिलाइज करेगी ग्लूकोज को, और ग्लूकोज की जो लेवल है दैट विल बी अ ड्रॉप डाउन, और जब ये ड्रॉप डाउन होगी तो वो फास्टिंग लेवल पे पहुंचेगी, या इवन जब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है तो उसकी लेवल इवन फास्टिंग से भी डाउन हो जाती है, फिर जब तक इंसुलिन की रिलीज बंद हो जाए। नन ऑफ द ग्लूकोज सैंपल शोज द एनी एविडेंस ऑफ ए ग्लूकोज। और फिर इस ग्लूकोज जो है वो किसी भी सैंपल में नहीं मिलेगा, यूरिन के सैंपल में इन दी नॉर्मल पेशेंट्स।
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हमारा कि इफ द फास्टिंग प्लाज्मा शुगर इज मोर देन, डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है तो उसका क्राइटेरिया यह है कि इफ द फास्टिंग प्लाज्मा शुगर इज मोर देन 120 mg पर डे, किसी भी पेशेंट का अगर 120 mg पर डे से ऊपर आता है, मोर देन 1 आर्कियन, एक आर्कियन से ज्यादा पे, then if the 2 hours post glucose load values of a oral glucose tolerant test is more than 200 mg per day, if the both fasting and 2 hours values are above this level, if the random plasma level is more than 200 mg per day or more than 1 atm, it is known as a diabetic mellitus. ये जो मिनी जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हम 2 सैंपल लेते हैं, एक लेते हैं फास्टिंग पे और दूसरा लेते हैं हम आफ्टर 2 आवर्स। अगर किसी भी लेवल पे अगर 200 mg पर डे से ग्लूकोज लेवल ब्लड का हमें ऊपर मिलता है तो इसका मतलब यह है कि वो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है। और फिर हमें ग्लूकोज लेवल अगर यूरिन में भी मिलती है और 200 mg पर डे से उसका लेवल जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज होता है, ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि ये मिनी टेस्ट के मुताबिक ये पेशेंट जो है वो डायबिटिक मेलाइटिस का। नाउ the IV glucose tolerance test. This is the test is undertaken for the patient with a malabsorption. जिस पेशेंट को ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में प्रॉपरली नहीं होती है, जैसे एंटीरोपैथी है या सीलियक डिजीजेस में है कि मोस्टली द ग्लूकोज इज नॉट एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइन, देयरफॉर द टेस्ट कैन नॉट गिव यू अ प्रॉपर रिजल्ट। सो अंडर दीज कंडीशंस ओरल ग्लूकोज लोड इज नॉट वेल एब्जॉर्ब। तो ओरल ग्लूकोज हम देंगे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो दैट विल नॉट गिव यू अ राइट रिजल्ट। सो देयरफॉर we always give to test the glucose tolerance in such a patient by giving an intravenous glucose in the patient, and then we have to perform the IV tolerance test is carried out by giving a 25 grams of a glucose dissolved in 100 ml distilled water as intravenous injection within 5 minutes. हम 25 ग्राम ग्लूकोज जो है ना 100 ml में डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके हम आईवी लगाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्फ्यूजन इज टेकन एज 0 टाइम, और इन्फ्यूजन से पहले जो है उसको हम 0 टाइम कहते हैं, और उसका ब्लड सैंपल्स लेते हैं टेकन एट 10 मिनट्स इंटरवल टू दी नेक्स्ट आवर। तो हर 10 मिनट के बाद उसका सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, और उसके बाद the peak value is reached within a few minutes and the value touches to a near normal in a 45 to 60 minutes. ये फिर 45 से 60 मिनट में नॉर्मल को रीच करता है। फिर हम इंटरप्रेट करते हैं in a normal individuals blood glucose level returns to a normal within a 60 minutes, and in a diabetic mellitus declines is slow. The initial values are attained in a 120 minutes. तो इसका मतलब ये है कि अगर डायबिटिक मेलाइटस का पेशेंट होगा तो उसकी डिक्लाइन स्लो होगी, अगर वो नॉर्मल होगा तो 60 मिनट्स में ग्लूकोज लेवल वापस रिटर्न होगी इफ वी आर टेस्टिंग दिस पेशेंट बाय इंट्रावेनस मेथड। acute infection, cortisol is secreted, the curve is elevated and prolonged. Liver diseases, the curve is elevated and prolonged. Hyperthyroidism, there is a steep rise in the curve. So the curve which we may have to develop after intravenous, so in an acute infection या फिर कार्टिकल स्टीरॉयड की सीक्रेशन की वजह से जो कर्व है वो एलिवेटेड होगी और प्रोलॉन्ग होगी। जबकि लिवर डिजीज होगी तो उसमें भी एलिवेटेड होगी और प्रोलॉन्ग होगी, जबकि हाइपरथायराइडिज्म होगा तो उसमें राइज होगा कर्व में। वेयर इज दी हाइपोथायराइडिज्म होगा अगर किसी में तो फ्लैट होगी कर्व, और hyperthyroidism, the thyroid hormones increase the absorption of a glucose from the gut. Starvation, there is a rise of a counter regulator hormones which shows an increased glucose tolerance. Mini or a modern glucose tolerance test as per current WHO recommendation. In a mini or a modern glucose tolerance test,
only 2 samples are collected. सिर्फ 2 सैंपल लिए जाते हैं, एक फास्टिंग पे के जो है 0 पे और 0 आवर्स पे, और फिर जो दूसरा जो सैंपल है वो हम 2 घंटे के बाद लेते हैं. So यूरिन सैंपल्स आर आल्सो कलेक्टेड, और फिर यूरिन सैंपल भी हम लेते हैं. हम फास्टिंग पे भी यूरिन सैंपल लेते हैं और 2 घंटे के बाद भी लेते हैं. तो द डायग्नोसिस मेड फ्रॉम द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन दीज रिजल्ट्स. और इसमें जो वेरिएशन आती है उसकी बुनियाद पे हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटिस है कि नहीं है. द डायबिटिक एक्सपर्ट कमेटी क्राइटेरिया ये है कि फास्टिंग पे आप एक सैंपल लो और फिर एक सैंपल जो है 2 घंटे के बाद लो. तो नॉर्मल पर्सन में 110 mg पर डे नॉर्मल है, तो नॉर्मल पर्सन में लेस देन 110 mg पर डे आएगा, एंड आफ्टर 2 आवर्स 140 mg पर डे आएगा इन दी नॉर्मल पर्सन. क्राइटेरिया फॉर डायग्नोस्टिंग डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट होगा तो उसमें 126 mg पर डे आएगा, और फिर आफ्टर 2 आवर्स मोर देन 200 mg पर डे आएगा. तो इसका मतलब है कि क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस intravenous glucose tolerance is that 110 to 126 mg per day, 140 to 199 mg per day. So this is a criteria for the intravenous glucose tolerance test. So if you are taking two samples, one is on the fasting and other is after 2 hours, then if the range is 126 on the fasting in the diabetic mellitus patient and more than 200 mg if you are giving orally, then this is the criteria. If you are giving an intravenous, then it may ranges 140 to 199 mg per day, and that will be the animal having a diabetes. Some are more precautions from glucose tolerance test, that for proper evaluation of the test, the subjects should be normally active and free from acute illness. जो जिस पे भी हम ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई भी इलनेस नहीं होनी चाहिए. Medication that may impair the glucose tolerance include the diuretics, contraceptives, drugs like glucocorticoids, niacin or phenytoin should be avoided on that day. उस पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन नहीं देनी चाहिए, और कोई भी जो पेशेंट है वो डायूरेटिक लेता है या इंट्रासेप्टिव लेता है तो वो बंद करनी चाहिए बिफोर you are going to test the person for the glucose tolerance test. So cortisone stress test used for detecting a pre-diabetic or a latent diabetes. Extended glucose tolerance test to diagnose the cause of a hyperglycemia, especially 2 to 3 hours after meal. So the criteria for the diagnosis of a diabetes, if the fasting plasma glucose level is 120 mg per day or a higher or on a more than 1 occasion, further evaluation of the patient with a glucose challenge is unnecessary. However, the fasting plasma glucose is less than 120 mg per day is suspected cases. Standardized oral glucose test may be done. अगर 126 mg पर डे से ऊपर आता है किसी भी फास्टिंग पे किसी भी पेशेंट का वैल्यू, तो वो डायबिटिक है. और फिर उसके बाद जब आप 2 घंटे के बाद आप उसकी ग्लूकोज लेवल देखते हैं वो 200 mg से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि वो डायबिटिक पेशेंट है और उसको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर फास्टिंग पे किसी भी पेशेंट की जो वैल्यू है वो 126 mg पर डे से नीचे है, तो ये फिर सस्पेक्टेड केस है. इसलिए फिर मिनी ग्लूकोज टेस्ट से ये कंफर्म नहीं होगा. इसलिए आपने वो स्टैंडर्डाइज्ड ओरल ग्लूकोज टेस्ट पे जाना है to confirm this patient, because this patient is doubtful patient, and to confirm it, and the confirmation can be done with a standardized oral glucose test, which has to be taken sample for 3 hours. After a half hour, after each half hour, you have taken 6 samples of that patient to confirm the patient for a diabetic mellitus. So criteria for the diagnosis of diabetic mellitus: a random plasma glucose level concentration, that's
the 11.1 millimole or 200 mg per day, accompanied by classic symptoms of a diabetic mellitus, polyuria, polydipsia, weight loss is sufficient for the diagnosis of diabetic mellitus. अगर किसी भी पेशेंट में 200 mg पर डे से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल मिलती है तो इसका मतलब ये है कि उसको पॉलीयूरिया होगा, उसके अलावा पॉलीडिप्सिया होगा और वेट लॉस होगा उस पेशेंट का। तो ये कंफर्मेशन है कि अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो वो डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट है। तो वी कैन कंफर्म दैट वन बाय द oral tolerance test, glucose test, that can confirm you whether the patient is suffering from a diabetes mellitus or it has any other abnormal condition which may have to produce the glycosuria or that may have to produce the blood glucose level higher, which is known as hyperglycemia. Thank you very much. This is the last slide in which I have to show you that that you may have to contact with me or you can watch this lecture again on the YouTube or even a Microsoft Teams. Thank you very much for patiently listening this one. Now I'm going to allow you students to ask any question related to this test.